Am I audible? So, hello everyone. I hope everyone is doing well. And welcome to FOSS Files Season 4. I hope everyone here has, in our audience, everyone has attended of the last seasons, or any episodes of the last season. How many of you have attended the recent seasons of our FOSS Files or any episode? No one has attended? Okay. Once attended from my school. Okay. Yeah. So, yeah, everyone knows that what are the topics in the FOSS files and all. Included. Topic is API and Teams. So, I think everyone has joined. Let's wait for 2 minutes. Time is 9:33. We should start at 9:35. Okay. We will start at 9:35. Just to wait 1 minute. And call out your friends if anyone is remaining to join. Message them, remind them for the episode. And believe me, the episode is going to be very crazy and nice. You will get to learn various new things, as well as some concepts will be there which are unknown to you, or maybe you may know that, but still you are not learned them in deep. So call out your friends, anyone if who is left behind or has not joined yet. We will start. Okay, we will wait again for some time. Till then, tell me, many of you attended the last seasons of the FOSS Files, right? So, what are you expecting in this season? What topics should we bring on in the next episodes? Except the topic that is in front of us. Any other topic that you can suggest, like, yeah, you can teach this, or we may start with this topic. Anything that comes in your mind. Anyone? Like, what are your expectations from the season? Like, now we are teaching about the APIs. Any other topic or new topic that you are thinking of that we should include in our FOSS files? Anyone? Yeah, no problem. So, how many of you guys know about the APIs? Any basic knowledge? Or yeah, we know them in advanced, anything like that. Because like some for someone or someone like me, APIs will be the new topic. But
The channel. Yes, the channel is full. Karthik has shared the YouTube link for the episode. If anyone wants to join, you can join the YouTube stream as well. The link is in the chat as well as share in groups. Okay, so let's get back to our topic. Does anyone know about APIs? Like, basic, or we are like, I have learned the APIs till this topic or that topic. No one knows about APIs. Is anyone sure? No one knows about the APIs. Yeah, it's used to return data from a source. Okay. Uh, anyone else except ourselves? No one knows about the APIs. Anyone used APIs in any projects? Yeah, you may have used in your mini project or any personal project as well. Yes, Yes. yes, so many. So many, right? So, APIs are something a crazy topic and on which we can discuss more and more. That is a lot of, there are a lot of topics to be discussed in the single subject or in the single topic API, right? Uh, I think now everyone has joined as channel is also full. So let's get started with our episode 1 of FOSS Files Season 4. And I will hand over the stage to our speakers, Shreyash Patel, Shruti Zadhav, and Aditya Apra. Thank you, Soumitra. I am Aditya Aprat, and I welcome you all to our new season of FOSS Files, that is API Alchemy. In this season, we will explore various API paradigms, how APIs are like designed, how they are implemented, and where to use which kind of API. Each and everything in We'll look at each and everything in detail. I welcome our presenters, Shreyas Patil and Shruti Zadav, and let's start. So, I'll ask Shreyas Patil to take over. Over to you, Shreyas. Thank you, Aditya. So, are you guys hungry for some knowledge? कुछ नया सीखना है आज? आपने APIs का नाम तो सुना ही होगा, like especially in web development, APIs तो बहुत यूज होता है. किसी API मतलब एग्जांपल दे सकते हो आप, जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया होगा? इसने भी API कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने प्रोजेक्ट में? नो वरीज, हम इस सीजन में APIs के बारे में सब पढ़ लेंगे. अब APIs का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? उतना तो आना ही चाहिए. आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मतलब वो भी कर सकते हैं. On YouTube, Naresh Ade is saying uh, APIs are used for communicating between two websites. करेक्ट. और पृथ्वीराज भी लिख रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. दैट राइट. APIs का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. अब ये 3 वर्ड्स का एब्रीवेशन है. कौन से 3 वर्ड्स? एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग और इंटरफेस. अब एप्लीकेशन कौन से होते हैं?
हम यूट्यूब यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं। दीज आर एंड यूजर एप्लीकेशंस जिससे हम स्पेसिफिक टास्क अचीव करते हैं। यूट्यूब से वीडियोस देखना, अमेजोन से items etc मंगाना। So those are applications. Then programming is all the logic and all the coding that is necessary to build that applications. So it may contain various variables, various methods, functions, etc. that make up the application. और इंटरफेस क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देता है बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब आप पूछोगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेल, जब आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और यूपीआई गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो वो अमेजोन की ऐप उस गूगल पे के पेमेंट पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होती है, किसी और पेज पे नहीं जाती। दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट गूगल पे हैज गिवन टू अमेजोन टू कंप्लीट इट्स ट्रांजैक्शन। And hope this example is clear. That is what APIs are used for. They enable two software components to communicate with each other using different protocols. अब protocols क्या हो सकते हैं? Protocols are like language which the software components use to communicate with each other. अब APIs का यूज करके हम जो अंडरलाइंग फंक्शन होता है उसे हाइड कर सकते हैं। मतलब क्या? गूगल पे कैसे वो पेमेंट प्रोसेस करता है वो हम अमेजोन से हाइड कर सकते हैं to provide security. That is the work of APIs. अब उसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक OS APIs। मतलब अगर कोई फाइल ओपन करनी हो तो एक OS API एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ओपन करके, उससे आप कौन सी भी फाइल ओपन कर सकते हैं। वो OS कैसे उस फाइल को ओपन करता है उसके डिटेल्स हिडन होते हैं। सिमिलरली किल एक फंक्शन होता है जो प्रोसेसर्स को टर्मिनेट करता है, उसके अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन हिडन होती है। और एक एग्जांपल हो सकता है लाइब्रेरी एपीआईज। आप में से बहुत लोगों ने पाइथन के मॉड्यूल्स सीपीपी में लाइब्रेरीज इंपोर्ट की होंगी। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स अबाउट द एनी लाइब्रेरी एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शंस? सीपीपी में भी बोल सकते हैं, पाइथन के भी एग्जांपल दे सकते हैं। राइट, हर्षवर्धन कह रहा है आईपी एड्रेस इन पाइथन, दैट इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स इन पाइथन। सीपीपी में आपने बहुत कुछ यूज किए होंगे, लाइक math.h, limit.h। तो क्या है? those are those are files which give you specific functions to include in your program, और that achieves some specific task। आपको उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं होती है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है। that is the use of API. Now in this seasons we are going to cover web APIs in detail. So you may ask, what is web APIs? So can you give me a short definition of what is web? Anyone? What is web? Well, web is like interconnected, as Harshvardhan said, interconnection of web pages and various resources over the internet. So basically, web APIs are APIs which are accessed over the internet using HTTP HTTPS protocols। अब ये प्रोटोकॉल्स तो आपने देखे ही होंगे। जब आप कौन सी भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो उसके स्टार्ट में HTTP नहीं तो HTTPS लिखा हुआ आता है। दैट इज द लैंग्वेज दे यूज टू एक्सेस
web pages and various other information over the internet. Now, web APIs are commonly used to fetch data, web pages, and to render what you want on the web browser or any application. It provides a specific over the internet communication between different clients, servers. अब ये टर्मिनोलॉजी आपको ज़रा नई होगी, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब वेब एपीआईज में फेमस एग्जांपल आ सकता है वेदर एपीआई का। आपको पता ही होगा गूगल एक वेदर एपीआई देता है। डज दैट रियली मीन कि गूगल ने खुद के वेदर इक्विपमेंट सेटअप किए होंगे उनके खुद के कंपनी में जो जिसकी इंफॉर्मेशन वो फिक्स करके दे रहे हैं? नो, राइट। गूगल यूजेस सम अदर कंपनीज डेटा जो एक्चुअली वेदर स्टडी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेके पैकेज करके अच्छे से एक एपीआई के दौर पे हमें यूज करने देते हैं। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ वेब एपीआई। नाउ web APIs work over the internet, right? So what all things about the internet do you know? इंटरनेट के बारे में क्या पता है? कब आया था? कैसे आया था? ओके, सो लेट्स लुक एट द बर्थ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे आया था? अब इंटरनेट का बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है? दो पीसेस को कनेक्ट करना। अब इस टाइम में करंटली आपको इजी लगता होगा कि हम इंटरनेट के थ्रू इस पॉडकास्ट कनेक्टेड है। एक क्लिक ऑफ बटन से मैसेजेस सेंड होते हैं और फ्लॉलेसली सेंड होते हैं। एक्चुअली इन द अर्लियर डेज ऐसा टाइप का कनेक्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन मेकिंग दैट इंटरकनेक्शन। इट वाज कॉल्ड द ARPANET, which was formed in 1969. एंड द फन फैक्ट इज कि जब वो कनेक्शन टेस्ट कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक वर्ड लॉगिन करके एक पीसी से दूसरे पीसी पे सेंड करने की कोशिश की, बट उस लॉगिन में से सिर्फ LNO यही दो लेटर्स सेंड हो पाए थे सक्सेसफुली, एंड इवन दैट वाज कंसिडर्ड अ ह्यूज सक्सेस बैक इन द डे। और फिर फर्दर डेवलपमेंट से हम जो यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट बनाया बनाया गया। नाउ those were the also guys which invented पैकेट स्विचिंग। अब सेकेंड ईयर वालों को ये पैकेट स्विचिंग एक्सेट्रा पता ही होगा। दिस इज द कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो डेटा हमें एक्सेस करना है उसे स्मॉल स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स में ब्रेक डाउन किए जाते हैं और पैकेट, और इसके साथ मेटा डेटा भी ज्वाइन किया जाता है, और फिर ये पैकेट्स नेटवर्क पे डाले जाते हैं and through which they go from your source to the destination. This is what they invented. Now ये कभी डिटेल में बाद में देखेंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। The next big milestone was achieved by Ray Tomlinson, who invented the email in 1971. Now he was the one who also invented the @symbol. ईमेल एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज थी, क्योंकि आप किधर भी बैठे हो आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हो, इवन इफ ही इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। So he was the one who started it all. And can you guess what was the first message he ever sent through the email? It was actually QWERTYUIOP. Can you make out the meaning? That's right. जैसे यश ने बताया, it is the first row of keyboard. So the first email ever sent was just a random message made from the
first row of the keyboard. Now, the next milestone was set by Tim Berners-Lee, who invented the World Wide Web in 1991. अब ये तो सबको ही पता होगा, www.google.com. सब लोग ये एक्सेस करते हैं टू टेस्ट देयर इंटरनेट. अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज एन सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस जिससे हम बहुत से वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. अब जैसे आई होप इधर तक आपको सब क्लियर होगा. अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ऑल क्लियर गाइस? ओके, लेट्स कंटिन्यू. अब जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने खुद का आर्पानेट बनाया, वैसे ही बहुत सारे बिग कॉरपोरेशंस लाइक आईबीएम, उन्होंने खुद का प्रोटोकॉल इन्वेंट किया फॉर देयर ओन बिजनेस यूज. इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? बहुत सारे कंपनीज ने अपने खुद खुद के प्रोटोकॉल्स बना दिए और फिर कम्युनिकेशन बिटवीन दोज नेटवर्क्स वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करना एफिशिएंट नहीं था. इस प्रोटोकॉल को आप इस प्रोटोकॉल को आप कैसे समझ सकते हैं कि इट इज लाइक अ लैंग्वेज दे स्पीक. सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मेड अ ARPANET network which spoke a XYZ लैंग्वेज और आईबीएम ने एबीसी लैंग्वेज कर दी. अब ऐसे ही बहुत कुछ लैंग्वेजेस बनती गई और it was not efficient at all to keep translation layers between them. So how do we mitigate this issue? अपने रियल लाइफ में भी होता है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस. इवन इन इंडिया देर आर ओवर 800 रीजनल लैंग्वेजेस, yet the only national language of our country is हिंदी, राइट? सो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया. दिस इज हाउ वी सॉल्व द communication issue. That is, we standardize the protocol of intercommunication between PCs. This was done by ISO, that is the International Organization for Standards. सबको पता है ना ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स बनाती है? इन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया था इंटर कम्युनिकेशन के लिए, कॉल्ड द ओएसआई मॉडल. ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्ट. नाउ दिस वाज अ रेफरेंस मॉडल. मतलब क्या कि ये एक रूल बुक की तरह था, एक गाइडलाइन टू टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल मॉडल्स ऑन जो इम्प्लीमेंट हो सके थे. सो इफ यू इवन वांट टू मेक योर ओन मॉडल, that should comply with the OSI so that it can be implemented in the real net. Now, इससे इस OSI मॉडल से हमने बनाया था TCP IP मॉडल. अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. This is currently the most widely used protocol for communication. Probably आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो TCP IP के थ्रू ही देख रहे हैं. Now, इस ISO ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे प्रिपेयर किया ये मॉडल? सो दे डिवाइडेड द नेटवर्क in 7 different layers. These are the layers here. From bottom to top, we have physical, data link, network, transport, session, presentation, and application layer. Each of these layers does its own task and is well separated. मतलब physical layer is concerned with physical media like आपके Ethernet card हो, Wi-Fi adapters, Ethernet cable, etc. Data link layer पे switches काम करते हैं. नेटवर्क लेयर्स पे राउटर्स. वैसे ही हर एक लेयर का अपना अपना टास्क स्पेसिफाई किया गया था. एंड दिस वाज इन द रेफरेंस मॉडल. तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल में क्या था? 4 लेयर्स बनाए गए थे: नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर. अब नेटवर्क एक्सेस लेयर में क्या किया गया था? दो जो ओएसआई मॉडल के सबसे बॉटम 2 लेयर्स है उन्हें मर्ज किया गया. फिर नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट को एज इट इज लिया गया और एप्लीकेशन लेयर को
एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स का मर्ज करके एक बड़ी लेयर बनाई गई। इस एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ईच ऑफ द लेयर्स ने खुद का टास्क करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिखा गया था बाय द आईएसओ, और ये सब स्टैंडर्ड डिस्कस करने के लिए खुद का एपिसोड बनाया जा सकता है। तो आपके लिए आपके लिए आप इतना याद रखो कि OSM model was the reference theoretical model which contained 7 layers, and TCP/IP protocol was the model which was implemented in real life, which contained 4 layers. Now, ये आप जब आप क्लाइंट और सर्वर ये नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर यूट्यूब का एग्जांपल लिए तो क्लाइंट कौन होगा, सर्वर कौन होगा, पता है आपको? Shreyas, let's wait for a little while YouTube is running a little behind. Naresh Ade is saying backend. Shreyas, your voice is lagging and choppy. Check your mic once. Till he checks it, I want to discuss one thing. Did you hear about the recent developments in YouTube ad blocking, where they injected server-side ads into the video stream? Anyone heard of that? Right now, the ads come from totally different server, and the videos come from a different server. So now what they are doing is, to prevent ad blocking, they are inserting the ads directly into the video stream. Hello, am I audible? Yes, you are. हमारे यहाँ के इंटरनेट ही चला गया, एक्सप्लेन कर रहे हैं, रोहित चला गया। एक मिनट जरा मैं अपना मोबाइल All right. Harshvardhan is saying YouTube revanced. Yes, it affects everything actually. YouTube revanced as well. All the ad blockers, because it's a totally different thing, and it is just testing right now. Today I got a couple of ads like that. You'll see. Yes. It is not enabled on every device right now. They are just testing on random users. So you will also get it in recent. You will get it soon, I guess. Okay, guys, I think I'm back. Hope my voice is clear. My voice is clear.
Yes, yes, you are clear right now. Okay, so my last question was if we access YouTube, clients कौन होंगे और server कौन होगा? So we have a lot of answers. So right, the viewers are the clients and the YouTube is the server. Now, this is one of the most famous architectures or model that is used in the internet today. मतलब एक रिक्वेस्ट करेगा और एक वो रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा. So it is important for us to make the distinction between client और server. तो client क्या होता है? Client होता है machines and programs जो हम यूज करते हैं, like ब्राउजर हो गया, यूट्यूब का ऐप हो गया, अमेजोन का ऐप हो गया. हम जो ऐप यूज करते हैं टू अचीव आवर टास्क, दैट इज द क्लाइंट. और मशीन मतलब जिससे हम एक्सेस करते हैं अपने पीसीस हो गए, स्मार्टफोन हो गए, दैट इज द मशीन विच इज कॉल्ड द क्लाइंट. अब सर्वर क्या होता है? इट इज अ मशीन दैट रन्स अ स्पेसिफिक प्रोग्राम that is capable of accepting requests, processing those, and giving out appropriate response. अब मैंने कहा इधर सर्वर्स में लिखा है कि वो दे आर जस्ट प्रोग्राम्स, नॉट स्पेसिफिकली मशीन्स. ऐसा क्यों होगा? गेस कर सकते हैं आप? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वो प्रोग्राम होता है ना, अगर आपने खुद के लैपटॉप में तो फोन में भी डाला, दैट कैन एक्ट एज अ सर्वर ऑल्सो. मतलब सर्वर का काम सिंपल होता है. जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो वेरीफाई करना, रियल यूजर से आ रहे कि नहीं, और फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स कुक करके उन्हें देना. That is the basic job of a server. So any machine can run that program and it will be called a server. Now examples of server can be HTTP servers which serve HTTP requests. मतलब जो वेब पेजेस हम देखते हैं, हैंडल ये HTTP सर्वर्स करते हैं. और डेटाबेस सर्वर्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक डेटाबेस क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सेट्रा. अब जैसे मैंने बताया, क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल इन द इंटरनेट. एक जगह क्लाइंट्स होते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं, और जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं वो सर्वर्स हो जाते हैं. अब इसमें अगर सर्वर टू सर्वर होगा तो उसे क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलेंगे. So we have a question from Harshavardhan. Can we have a model which is serverless? Well, there is actually an approach. अब क्लाइंट सर्वर मॉडल एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है जिधर सर्वर्स पे all the data होता है और clients just access those data. There is also another way. किसी को पता है वो? Probably piracy जब करता है तब यूज होता है, unfortunately. And हाँ, पृथ्वीराज ने आंसर दिया है. Yes, server can also act as client. So client to client, server to server में भी अगर कोई सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उससे भी क्लाइंट कहा जा सकता है. इट इज जस्ट एन मशीन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, दैट्स इट. Anish is answering torrents. एंड दैट इज राइट. दैट वर्क्स ऑन अ पीयर टू पीयर मॉडल जहां इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज्ड होती है. सिर्फ किसी एक सर्वर पे नहीं तो किसी एक लोकेशन पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती. एंड हर्षवर्धन, टॉर टॉर एक अलग कंसेप्ट है विच इज यू मतलब
खुद को एनोनिमाइज करने के लिए यूज होता है, दैट इज डज नॉट कम अंडर पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर मॉडल, किसी को कोई डाउट है इस मॉडल में? डिसेंट्रलाइज मतलब यस का क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइज इज ऑलवेज बेटर और नॉट, और कैसे हो सकता है डिसेंट्रलाइज जब आप करते हैं तो उन जिधर लोकेटेड है वो रिसोर्स उसके बॉटल नेक्स भी आते हैं। मतलब जब बिग कंपनीज ये सेंट्रलाइज सर्वर्स एस्टेब्लिश करते हैं तो उनके नेटवर्क जो नेटवर्क मतलब बैंडविड्थ होता है वो सब ज़्यादा होता है, दे कैन सर्व मोर रिक्वेस्ट। बट डिसेंट्रलाइज में कैसा है, अगर एक ही मतलब स्पेसिफिक रीजन में अगर एक ही कोई तो सर्वर होगा वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए, वो एक हर्डल बन सकता है, सबको एक्सेस करने नहीं आ सकता। सो डिसेंट्रलाइज्ड हैज इट्स बेनिफिट्स लाइक सिक्योरिटी, मतलब इंफॉर्मेशन बैकअप्स रह सकते हैं, बट centralized is the one that is mostly used. I hope this is all clear. अगर कोई doubt हो तो you are free to ask. I guess decentralized is it also depends on the number of peers connected. There are a Peers lot of connected, peers, yes. then it is the performance is acceptable. But uh, in the case of torrents, right? Yes, yes, yes. और torrents में कैसे होता है, dead torrents भी होते हैं, मतलब लिंक एक्टिव है बट वो कोई भी सर्व नहीं कर रहा वो फाइल एग्जैक्ट, तो आपकी फाइल इट इज लॉस्ट। सो डिसेंट्रलाइज में वो भी एक डाउनसाइड हो सकता है। The niche is saying security can be compromised. Yes, in the sense that uh, your IP address is shared with everyone on the network instead of just one server. So you can trust that one server, but you cannot trust everyone on the network. और सिक्योरिटी मतलब अगर एक स्पेसिफिक सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, it can also lead to leakage of information. It can be really detrimental. Yes, Prithviraj is asking whether it reduces performance. So decentralization, it depends on how many peers are there. If there are a large number of peers connected to each other, then they can share their data and it will consume less bandwidth on their side, but the performance is higher. The download speeds are higher on the client side. But in a centralized situation, the server is all the load comes upon the server, right? So it depends. If the servers are it's a big company, then they can afford a big server farm and such. So it depends. Okay. Is everyone clear till now? Shall we move forward? Okay, now the next, as I said, we'll look at application layer. Of application layer, if you recall, it is the topmost layer in the OSI model as well as the TCP/IP model. What it deals with is application मैंने APIs explain करते वक्त definition बोली थी applications की. Can anyone recall and please tell me? हाँ मैंने पूछा कि एप्लीकेशन एपीआई एक्सप्लेन करने के वक्त मैंने एप्लीकेशन की एक डेफिनेशन बोली थी. डज एनीवन रिमेम्बर? Well, applications are programs designed for the end users like us. मतलब हम YouTube, Amazon यूज करते हैं, वो एप्लीकेशंस हैं. अब ये एप्लीकेशंस को कुछ डेटा लगता है टू प्रोसेस, नहीं तो आप हमें देखने के लिए डेटा लगता है. तो वो डेटा कहाँ से फेच होता है? वेल, ये एप्लीकेशन लेयर से फेच होता है. सो हियर आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द फेमस
services that the application layer provides. इसकी फुल फॉर्म आप चैट में भी डाल सकते हो, नहीं तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो. Okay, DNS Harshvardhan is saying domain name system. That is right. File transfer protocol, FTP के लिए that is right. Right. And need for speed, NFS के लिए that is really wrong. Simple mail transfer protocol, that is right, Pawan. और पृथ्वीराज ने तो सभी डाले हैं. अच्छा है, nice. Hypertext transfer protocol, simple mail transfer protocol domain. That is right. लास्ट वन का किसी को पता नहीं है क्या? एनएफएस हर्षवर्धन ने ट्राई तो किया. ये तन्मय ने कहा है नेटवर्क फाइल सिस्टम. दैट इज राइट. सो लेट्स लर्न अबाउट ईच वन. अब एचटीटीपी इट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सबको पता ही होगा. हम यूज करते हैं. इट इज यूज टू फेच वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया. हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब दूसरा है SMTP. दिस इज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नाउ एज द नेम सजेस्ट, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर. और इसमें ये मेल टू मेल सर्वर्स को भी हैंडल करता है और क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है. अब नेक्स्ट है DNS. नाउ DNS इज डोमेन नेम सिस्टम. आप URLs किस किस को पता है क्या करते हैं? URLs फुल फॉर्म. Yes, as Harshvardhan is saying, resource allocator, alias for IP address. Okay, URL. हाँ, पृथ्वीराज ने डाला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL का वो फुल फॉर्म होता है. हाँ, जब हम URL डालते हैं, फॉर एग्जांपल youtube.com, दैट वो रिक्वेस्ट एक यूट्यूब के सर्वर से करता है. अब उस सर्वर का भी कोई आईपी एड्रेस होगा यूनिकली आइडेंटिफाइड, जिधर से हम अपना डेटा फेच कर सकते हैं. सो उस यूआरएल को उस आईपी एड्रेस से मैप करने का काम ये डीएनएस करता है. एज तनिष्क said, it is kind of an alias for IP address. But as IP addresses are like harder to remember, हम URL यूज करते हैं. youtube.com is much easier to remember than its IP address. हम वाईफाई 6 के लॉगिन के लिए डायरेक्ट आईपी एड्रेस यूज करते हैं. किसी को याद है वो कंप्लीट आईपी एड्रेस क्या है? अरे बाप रे. Yes, many people with superhuman memory here, Harshvardhan being one of them. Well, that is right, but generally it is much harder to remember, right? So to simplify that job, DNS system gives us URL, which is mapped to a IP address. Now the next is file transfer protocol. Now ये क्या करता है? हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की सुविधा देता है between our machine and any server that we wish to send the file to. And then we have NFS, that is network file system. अब जब हम SSDs एक्सेट्रा लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो it shows us into our network drives, right? Aradhya is asking one question. Okay, What is the difference difference between between URL and URN? So, URI is Uniform Resource Identifier, right? It is the what we can say. URL is a type of URI. URL is used for resources on the internet.
And there is also something called URN, which is used in things like books for like ISBN number and such. URI इज मतलब एक सिस्टम ही होती है जो आइडेंटिफाई करती है, और URL होता है वो एक एलियस होता है वेबसाइट के लिए. Now back to NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम. नाउ जब हम एक SSD नहीं तो हार्ड ड्राइव माउंट करते हैं, वो अपने नेटवर्क ड्राइव्स में आ जाता है. इससे हम उस फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं और प्रेफर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन फाइल्स पे. और नेटवर्क फाइल सिस्टम्स क्या होता है, अगर किसी ने ओवर अ स्पेसिफिक नेटवर्क फाइल माउंट की हो, तो वो सब लोगों को दिख जाएगी ओवर दैट नेटवर्क. That is the facility provided by Network File System Protocol, which allows you to mount uh, network drive, मतलब hard drives over a network as if they were mounted in your own machine. Like Windows के फाइल एक्सप्लोरर में नीचे वन ड्राइव का ऑप्शन होता है, उधर ड्राइव्स भी आते हैं, राइट? नेटवर्क ड्राइव्स का ऑप्शन, हाँ, हर्षवर्धन में डाला है. यस यस, दैट इज द स्पेस फॉर नेटवर्क ड्राइव्स. अगर वो इसी नेटवर्क आप जो कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर वाईफाई 6 से कनेक्टेड है और किसी ने वाईफाई 6 पे कोई तो ड्राइव माउंट की है, तो वो माउंटेड ड्राइव आपको इस लोकेशन पे दिख जाएगी. दैट इज द फीचर प्रोवाइडेड बाय दिस NFS प्रोटोकॉल. अब लेट्स स्टडी HTTP in detail because we will need it in our future episodes as well. Now, HTTP क्या होता है? The basic working is that it allows web-based application to exchange information. मतलब आप web pages request कर सकते हैं, multimedia such as images, videos, audios, etc. receive send कर सकते हैं. Under the hood, it uses the TCP/IP based protocol. अब ये TCP/IP प्रोटोकॉल किस पे बेस्ड है, कोई बता सकता है मुझे? That's right. Yeah, it is based on OSI model. Now the HTTP protocol is a connection and stateless protocol. मतलब क्या? कनेक्शन लेस का मतलब है जब एक कनेक्शन करता है, क्लाइंट सर्वर से एक रिक्वेस्ट करता है, तो उस मोमेंटरी टाइम के लिए क्लाइंट मेक्स अ कनेक्शन विद द सर्वर, एंड वंस द सर्वर serves the request in form of a response, and once this cycle is complete, the connection is terminated immediately. एक सिंपल एग्जांपल में देख सकते हैं. अ, मतलब इमेजिन करो आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हो और लाइब्रेरी में एक दरवाजा है और उधर एक लाइब्रेरियन भी बैठा है. जब आप दरवाजा ओपन करते हो, इट इज लाइक स्टार्टिंग अ कनेक्शन. फिर आप लाइब्रेरियन, जिसे आप सर्वर भी कह सकते हो, उससे बताते हो कि मुझे XYZ बुक चाहिए, और एंड वंस यू टेक द बुक एंड गेट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, द डोर इज शट. मतलब वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है. सो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के लिए एक ही कनेक्शन बनता है. दैट वाज इट इज व्हाट कनेक्शन लेस मीन्स. एंड स्टेटलेस मीन्स कि उसी एग्जांपल में वो लाइब्रेरियन है ना, उससे आप हर टाइम भूल जाते हो, मतलब वो आपको भूल जाता है. मतलब इवन इफ यू रिपीटेडली गो टू हिम एंड आस्क द स्पेसिफिक बुक, हर बार आपको स्पेसिफिक करना ही पड़ेगा कि आपको कौन सी बुक चाहिए, क्योंकि वो लाइब्रेरियन भूल जाता है हर वक्त कि आप कौन सी बुक चाहिए. दैट इज द स्टेटलेस. दैट इज द क्लाइंट and the server only momentarily know each other. And excuse me, आपने किसी ने कुछ बोला क्या? ओके, सो स्टेटलेस में क्या था कि
स्टेटलेस कनेक्शन की क्लाइंट और जो सर्वर है momentarily know each other, and once the communication is over they forget about each other. That is the stateless thing. I hope ये आपको clear है. Now let us look at the versions of HTTP. Now first was HTTP 1.0. This was standardized in 1961 and it was the first globally released HTTP version, and it had various methods. इन मेथड को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? इट वर लाइक एन कमांड फॉर द सर्वर. मतलब गेट मेथड है, वो एक स्पेसिफिक यूआरएल से एक रिसोर्स फेच करता था फ्रॉम द सर्वर टू योर ब्राउजर. देन पोस्ट यूज्ड टू अपलोड द इंफॉर्मेशन, मतलब क्रिएट कर सकता था टू द टारगेट लोकेशन. हेड just had worked the same as GET, but it only requested the metadata from the server instead of the whole body. Now, HTTP 1.0 was only limited to fetching basic HTML documents, and it also gave a provision for status codes. अब ये status codes क्या है हम future में देखेंगे, but in short, they were like an indicator for the current क्या चल रहा है कनेक्शन में, कि वो सक्सेसफुल हो गया है क्या एरर आ गया. इसके लिए वो स्टेटस कोड यूज किए गए थे, हम फ्यूचर में देखेंगे. और जैसे मैंने बताया, इट डिड नॉट हैव परसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था. फिर आया HTTP 1.1. This was standardized just a year later in 1997, and it overcame many limitations. And also, there were additional methods like delete, which could delete specific resource from a server. Then we had connect, which would re-establish the connection between client and the server. Then we had put, which used to replace all the information on the server by the payload information that you have provided. And trace method was used to trace out the path that you use to connect with the server. Now HTTP 1.1 में एक बड़ा फीचर जो दिया गया था वो था पाइपलाइनिंग. अब ये पाइपलाइनिंग क्या है? It allowed the stuffing of multiple requests into one single packet. So instead of creating a new connection for every packet sent, it used to गेट टुगेदर्स ऑफ पैकेट और एक ही कनेक्शन में वो सेंड कर देता था. इससे इफिशिएंसी नेचुरली बढ़ गई, बट 1.1 में भी परसिस्टेंट कनेक्शन नहीं था. अब HTTP 2.0 में बहुत सारे न्यू फीचर्स इंप्लीमेंटेड थे. इट वाज स्टैंडर्ड वे लेटर इन 2015 एंड इट इम्प्लीमेंटेड मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? वेल, पाइपलाइनिंग क्या था? मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक ही टाइम पे एक ही कनेक्शन पे सेंड करना. मल्टीप्लेक्सिंग में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइमल्टेनियसली स्विच कर सकते हैं हम, साइमल्टेनियसली सेंड कर सकते थे. दैट वाज द फीचर गिवन बाय HTTP. इसमें स्ट्रीम प्रायोरिटाइजेशन भी दिया गया था. मतलब जब हम कोई वेब पेज लोड करते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट और जो जावास्क्रिप्ट एसोसिएटेड है, that is very much important for us to like easily see the web page to improve its functionality. मतलब पहले XYZ रिसोर्स आएंगे, फिर बाकी के आएंगे. प्रायोरिटी सेट करने की सुविधा HTTP 2.0 ने दी थी. फिर वी ऑल्सो हैव हेडर कंप्रेशन, जो मेटा डेटा मैंने बोला उसे कंप्रेस करने की सुविधा HTTP 2.0 में थी. और फाइनली HTTP 2.0 में persistent connection थे. So it used a single long-lived connection until all the communication between the client and server were over. So that improved efficiency by a lot.
देन वी ऑल्सो हैव सर्वर पुश। मतलब क्या, अगर आपने सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट मांगा बट उसके साथ एसोसिएटेड CSS और जावास्क्रिप्ट भी है जो आपका क्लाइंट थोड़ी देर बाद मांग रहा है, वो सर्वर आइडेंटिफाई कर लेगा और उसी HTML डॉक्यूमेंट के साथ CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ आपको देगा। इससे क्या इफिशियंसी बढ़ी, आपको फिर से कनेक्शन CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सेट्रा बनाना नहीं पड़ा। So these were the improvements over the time HTTP made, and this is the currently most widely used version. So I hope अब तक का सब आपको समझ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो एपिसोड होने के बाद भी पूछ सकते हैं। Now I would like to hand over the session to Shruti. So, hello everyone. I've seen that कि अभी चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल एंड ऑल, मतलब माहौल तो बन गया है ओके कि कुछ ओके, सीखना है एंड एक मिनट, सॉरी, स्टेटस कोड एक में एक्सप्लेन करने का भूल गया। सो मैंने कहा था कि स्टेटस कोड बाद में बताऊंगा। These are like milestones for the connection and give the current state of the HTTP request response cycle. So आपको 404 पता ही होगा, बहुत फेमस है, इसलिए स्टैंड करता है ये। Okay, Prithviraj is saying gateway not found. Tanishq is saying not found. Well, जब रिसोर्स सर्वर पे लोकेटेड ना हो तो उससे 404 एरर मैसेज आता है, जो फ्रस्ट्रेटिंग है, लाइक रिसेंट लीड कोड प्रॉब्लम्स में भी आया था। वैसे ही बहुत कुछ, इससे मैंने 5 ही मेंशन किए, लाइक 100 फॉर कंटिन्यू वंस द इनिशियल रिक्वेस्ट कनेक्शन इज सक्सेसफुल, 200 फॉर ओके, जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो 200 स्टेटस कोड डिस्प्ले होता है। फिर वी हैव 301 when a resource from a particular URL is shifted to another URL, and then we also have 500 which signifies internal server error. ऐसे बहुत सारे status codes हैं which give the current state of the request response cycle and which help us developers in debugging the problem, right? और कोई status codes आपको पता है जो मैंने mention ना किया हो? Yes, there is 504. I think 504 stands for Getaway Timeout, right? Yes. Then we have 503 Service Unavailable. ऐसा बहुत सारा है which help us to debug. Okay, reasons. Well, Kanishk is asking, is there any reason why these numbers were chosen for error codes? Well, जो first number है, like 1, 2, 4, 3, 5, this signify a clash of reasons. Like अगर 100 हो तो it is for informational purposes like continue, switch. अगर 2 से शुरुआत हो तो they signify successful operation. अगर 3 से हो तो redirection, कि कोई रिसोर्स यहाँ से वहाँ गया है. Then 4 signifies client error, मतलब सर्वर पे कुछ ना हो. क्लाइंट मतलब सर्वर पे लोकेटेड रिसोर्सेस के बारे में जो क्लाइंट को अवेलेबल नहीं है. और फिर 5 से सिग्निफाई करने वाले स्टेटस कोड सिग्निफाई सर्वर एरर, कि वो सर्वर आपके स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकता. उसके लिए बहुत कुछ है.
or status code. I hope this is clear. Now I would like to hand over the session to Shruti. ओके, सो हेलो एवरीवन अगेन। तो आपको अब तक तो लाइक सब पता चल गया हो गया व्हाट इज़ एपीआई, इतना सब कुछ डिस्कस किया। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कि हाँ, अब मैं एपीआई अपने प्रोजेक्ट में वगैरह यूज़ करूँगा और करूँगी लाइक दैट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट क्वेश्चन? व्हाई नॉट डिज़ाइन माय ओन एपीआई, अ वेब एपीआई? हाउ मेनी ऑफ यू? जस्ट हर्षवर्धन? Okay. So I see there is an excitement for this. So now let us discuss the principles of web API design. मतलब जब आप अपना web API design करोगे, now I see that there are so many excited for this. What are the principles that you should follow while designing it? So first, let's move with abstraction of concerns. What do you think of this term, abstraction of concerns? Okay, hiding something. Again, any more responses? All right, Harshvardhan. So abstraction of concerns, we can relate it to like separation of concerns also. तो इसमें basically होता क्या है कि मॉड्यूल और पार्ट ऑफ ईच एपीआई एक ही सिंगल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है, जैसे कि डाटा रिट्रीवल हुआ, बिजनेस लॉजिक हुआ या ऑथेंटिकेशन हुआ, ऐसा कुछ। और इसमें दूसरा पॉइंट जो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोज ओनली व्हाट्स नेसेसरी फॉर द यूजर्स। ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ऐसा लूंगी कि व्हाट इफ आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई order something, or I think of reserving a table for myself. So I need not know all the details of the restaurant, right? कि कितने लोग हैं, टेबल कौन सा खाली है एंड ऑल। सो दैट्स एनकैप्सुलेशन, हाइडिंग इंटरनल वर्किंग्स फॉर अ क्लियर एंड यूजर फ्रेंडली एपीआई। और पहला जो है कि ईच मॉड्यूल और ईच पार्ट ऑफ एपीआई एक ही सिंगल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। ऑलराइट, if this is clear, we can move forward to another principle of web API. I hope this is clear. Yes. So let's move forward to standardized protocols or interfaces. सो प्रोटोकॉल्स के बारे में तो सुना ही होगा अभी तक, लाइक एचटीटीपी पे बहुत डिस्कशन हुआ है आपका, श्रेयस ने भी समझाया है, राइट? सो व्हाट बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज, आदित्य, आई वुड लाइक टू सी द स्लाइड ऑफ, यस, थैंक यू। सो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स, तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स में बेसिकली होता क्या है, एचटीटीपी व्हिच इज लाइक मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वेब एपीआईज, डिफाइंस द सेट ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स, गेट हुआ, पोस्ट, पुल, डिलीट, ऐसे, व्हिच आर वेल अंडरस्टूड एंड वाइडली सपोर्टेड। तो वैसे बहुत सारे वेब एपीआईज होते हैं, राइट? तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स बेसिकली करते क्या है, जैसा श्रेयस ने बताया एचटीटीपी वाला, तो in web APIs में some of them even use SQL like schemas like GraphQL और gRPC, जो हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ विल, एंड दिस इज बेसिकली लाइक इट डिफाइंस द सेट ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स, जैसे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसा हमने लाइक वो सिस्टम देखा, तो इट बेसिकली इट डिफाइंस द सेट ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स। Now, moving forward to error response mechanism. So, error response mechanism होता क्या है? As he said, and as we all discussed the last point, 404 not found and many more, which also you know. So, इसमें error response mechanism में it ensures that the client receive meaningful and actionable feedback. For example, मैंने कुछ तो ऑर्डर किया एंड उनके पास वो है ही नहीं। I order something and they ran out of eggs and all. So they come and tell me, right? So I get a meaningful feedback and actionable feedback, so that अभी मैंने जो API मैंने जो रिक्वेस्ट की है, तो उसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, राइट? सो इसमें क्या होता है, HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं, जो हमने रिसेंटली डिस्कस किए। They use standard HTTP status code to indicate the result of an API request. The another is error messages. क्लियर एंड कंसाइज एरर मैसेजेस भी आते हैं, ताकि क्लाइंट को पता चले क्या गलत हुआ है और कैसे फिक्स करते हैं।
अनदर देयर आर एरर कोड्स, जो एरर कोड्स में क्या होता है, दे error codes in response body, they categorize errors and make them easier for the client to handle them programmatically. Or again, there is a detailed error information also. In detailed error information, वो missing parameters, suggestions और correct the request के लिए भी सब provide करते हैं आपको. I hope you have got this point. Shall we move forward? All right. So moving forward to proper documentation. Now, by documentation, all I mean is like API documentation होता क्या है? तो API documentation is like a guidebook. आप में से कितने लोगों ने लेगो खेला है बचपन में, या some kind of remote control game, or some kind of building the blocks game? ऐसा किन लोग, how many of you have played such games? ऑल राइट, तो जब इतना बड़ा बॉक्स आता था तो यू मस्ट हैव बीन लाइक वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, एंड उसके साथ एक छोटा सा बुक भी आता होगा, लाइक अ गाइड बुक, हाउ टू प्ले दिस एंड ऑल वाला. तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? गाइड बुक. अच्छा, बट एनी गेम. सो गाइड बुक जैसा होता है, जो एक्सप्लेन करता है कि हम एपीआई को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली. हाँ, so developers need such API documentation to understand what an API does and how to interact with it. Now let us move forward with this documentation part only. So comprehensive documentation होता है और दूसरा होता है interactive documentation. तो comprehensive documentation में क्या होता है कि API के सारे एस्पेक्ट्स, जैसे कि एंड पॉइंट्स हुए, मेथड्स हुए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट हुए, एरर कोड्स हुए, वो सब कवर करता है. एक क्लियर एग्जांपल देता है हाउ टू यूज एन एपीआई फॉर कॉमन यूज केसेस. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में. और दूसरा होता है इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन. आप में से बहुत लोगों ने लाइक स्वैगर या पोस्टमैन के बारे में सुना होगा. So they can help create interactive documentation, which also allows developers to test their API calls. Then your documentation should include consistent updates. अभी you took a new game, you saw that guidebook and all, तो obvious सी बात है कि वहाँ पे information जो है वो updated रहनी चाहिए. So outdated documentation can lead to confusion and errors. इसलिए. And another thing is user friendliness. वो documentation जो आपने लिखा है वो easy to navigate and search होना चाहिए for developers to quickly find the information. All right? Yes, of course. Stay with us till the whole season so that we can explain a postman better. Now, moving forward with security implementations. I hope you're understanding everything till now because it's the easiest part we'll be discussing. तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस में अभी ये जो पॉइंट्स है, इनक्रिप्शन, तो ऑब्वियसली आई एम सो श्योर कि आप इन सारे वर्ड से बहुत सारे फेमिलियर होंगे. मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस मोर बेटर देन मी, आई गेस. तो एन्क्रिप्शन में क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द डाटा एट द रेस्ट एंड इन ट्रांजिट. उतना तो सबको पता है. सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस while designing a web API, this is like an important thing. Secondly, authentication. Authentication में क्या होता है? It verifies the identity of users or the systems trying to access that API. Got it? The another thing is rate limiting. तो rate limiting क्या होता है? It prevents limiting the number of requests by an user that he or she can make within a certain time frame. अब obvious सी बात है, मैं कहीं जाऊंगी तो मेन्यू कार्ड में से सब तो नहीं मंगाऊंगी. As हर्षवर्धन said, इतने अमीर तो नहीं है हम, right? तो ये रेट लिमिटिंग जैसे आता है कि इट रेट लिमिटिंग क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है, लिमिट्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यूजर कैन मेक विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम. अनदर इज इनपुट वैलिडेशन. इनपुट वैलिडेशन ये इंश्योर करता है कि जो इनपुट एपीआई रिसीव कर रहा है वो वैलिड है और सिक्योर है. देन देयर आर एपीआई गेटवेज. तो एपीआई गेटवेज में क्या होता है? एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है बाय मैनेजिंग ट्रैफिक, enforcing your policies and offloading tasks from the backend. I hope this point is clear. Now moving ahead to the next point that are needs. I hope आपको सारे principles समझ आए गए होंगे, right? Are there any questions, any doubts regarding? You can put in the chat box. Okay, all right. So let's move forward to needs of API, web APIs. अब अपने श्रेयस से इतना सुना है, इवन आदित्य ने बहुत कुछ बताया आपको अबाउट
web APIs and all. Now I need answer from you. What is the need of an web API? Few of your responses can make any difference. Like, why do you think an web API is needed? I'm sure we are going to discuss this topic. To facilitate communication between organizations. Okay. हाँ, obviously वहाँ different system communication तो लिखा ही है. और compiling resources from different websites to get the interconnection in different websites. Okay. Need of an interface for efficiency. सब कुछ सही है. All right. So I think you are getting close to all this. So let's begin with interoperability. तो interoperability में different system communication, जैसे आपको like word से ही समझ आ रहा होगा, APIs let different apps chat even if they are built differently. तो क्या होता है कि web APIs allow करते हैं diverse system को, पॉसिबली जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म से बने हो उनको सीमलेसली इंटरेक्ट करने के लिए इसके लिए बनाया जाता है. सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जैसे एचटीटीपी हुआ और डाटा फॉर्मेट्स लाइक जेसॉन एंड एक्सएमएल. तो एपीआईज इंश्योर करते हैं कि ये सिस्टम्स जो है वो कम्युनिकेट करे विदाउट नीडिंग टू नो इंटरनल वर्किंग्स ऑफ ईच अदर. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर नीड. अब नीड तैयार कैसे होती है? बिकॉज दे हैव पर्टिकुलर बेनिफिट, right? We create need for something because they have some key features of some benefit. So consider them as the key features of web API. That's why we are needing them. Coming to scalability. Scalability में क्या होता है? Microservices architecture and load distribution. इसका मैं एक basic example देती हूँ. Tanish, you have to say something? Okay. It will be better if you switch off your mic. तो स्केलेबिलिटी में लाइक व्हेन देयर इज अ सेल ऑन Amazon या Flipkart, सो इट कम्स लाइक बहुत सारे यूजर्स एट अ टाइम लाइक उस पे जाएंगे, उसको यूज करेंगे, राइट? Our Discord server bots also use APIs, am I correct? What do you think? What others think about this? Okay, so scalability में that comes as a point कि जब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बारे में, जब सेल लगती है समथिंग होता है, बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं, राइट? तो तब स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो क्या करता है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर मतलब दे एनेबल बिल्डिंग एप्लीकेशन एज़ सेल्फ कंटेंट सर्विसेज, सेपरेटली काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स इट स्केलेबल इनफ। Now moving forward to another need of web API, that is reusability. Okay, so reusability में basically क्या होता है? APIs allow the creation of reusable services and components that can be used across multiple applications. तो इससे development हो जाती है, cost efficient हो जाता है. तो cost efficient कैसे हो जाता है? By reusing existing API services, development cost और time significantly कम हो जाता है. Okay, I hope this point was clear. As the word goes reusability. Yes, so let's move forward to our next need, that is flexibility. तो flexibility में there are 2 points given which are multi-platform system और agility. तो multi-platform system में क्या होता है, तो APIs enable करते हैं applications को to support platforms like web, mobile, IoT, exposing functionality that can be consumed by any client capable of making API requests. तो और मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट में जैसे आपको समझ आता है बाय द वर्ड इटसेल्फ कि वो लाइक एक्सक्यूज मी. ओके, सो एपीआईज एनेबल करते हैं एप्लीकेशंस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी एक्सपोज करके कोई भी क्लाइंट ने किसी भी क्लाइंट ने अगर कोई एपीआई रिक्वेस्ट की तो वो उनकी फंक्शनैलिटी एक्सपोज करके. गॉट इट? तो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एजिलिटी. तो एजिलिटी में क्या होता है? एजिलिटी इज बेसिकली चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी. तो चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी में changes can be made to the backend services independent of the front end. Got it?
I hope everything is clear till now, all the needs and the principles that I've discussed. Over to you, Aditya. One second. Naresh, your mic is on. Please mute yourself. Okay. Thank you, Shruti. And I thank our presenters today for explaining in such a beautiful manner. And I'll tell you, this episode was like a primer for you all. It was for just a introduction to get your uh, give you a basic idea of what APIs are. In the next few episodes, we'll dive deep into various API paradigms like REST APIs, GraphQL, and remote procedure calls, and web sockets, web RTCs, and you'll have a lot of fun. We have a lot planned for you, and I expect this kind of audience for those episodes as well. So now, if anyone has any questions regarding the whole session, anyone can unmute their mic or type it in the chat. Okay, Prithviraj is asking the header metadata. What exact doubt do you have in the metadata? Okay, I'll take Harshvardhan's question till then. Why not all websites provide APIs? Uh, because their actual purpose is different, I guess. Some websites, for example, static websites, they need not provide any APIs. If APIs provide some actual functionality, only then it is uh, beneficial for them to actually expose the API to the public. Otherwise, all the APIs they use are in between their website and the hosting server, the front end and the back end. A funny एंड meme. Mm. हर्षवर्धन का डाउट एक्सटेंड मतलब रेडिट का एपीआई था पता है दूसरे वेब एप्स के लिए एक हुआ करता था उन्होंने वो बंद कर दिया क्यों जब ये आप एपीआई रिक्वेस्ट बनाते हैं किसी और एपीआई के लिए उसकी प्रोसेसिंग उनके वेब सर्वर्स पे जाती है which will incur cost on their side not your so उसकी वजह से most companies don't give free APIs थोड़े देते हैं बट उन पे भी लिमिट होती है बहुत कुछ Right, Reddit का API पेड हुआ है. वही पेड हुआ है और बहुत सारी एपीआईज है जो पेड है अपने चैट जीपीटी का भी एपीआई है फॉर देयर चैट 4.0 मॉडल 3.5 वो भी पेड है सर Prithviraj is asking, he didn't understand the header compression part. I guess in one of the HTTP versions. अब हाँ मैंने जो पैकेट्स बताए थे अब हेडर में क्या होता है मेटा डेटा मतलब क्लाइंट से जब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो क्लाइंट कौन है उसका आईपी एड्रेस क्या है कौन से सर्वर पर हम सेंड कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस क्या है कब सेंड कर रहे हैं कितना सेंड कर रहे हैं ये सब इंफॉर्मेशन मेटा डेटा होती है
जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है उसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कनेक्शन दैट हेडर मेटा डेटा इज रिक्वायर्ड. नाउ कंप्रेशन का मतलब सिंपल ही है, जो साइज है उसे रिड्यूस किया गया था. So compression decompression was allowed by HTTP 2.0, but not the previous ones. I hope that clears. Anything you want to share about any topic here? Anything you know and you want to share with the rest of us? Guys, did you like this episode? Did you understand what was going on? Yes, Yash Patil is saying GitHub also is rate limiting their services. Yes, Tanish is saying that's because they are using data for training models. You can also unmute your mics and talk directly.
Pratiksha is asking what is web API routing. Anyone has answer for that? I would like to hear someone answer that. I too have no idea. Aradhya is asking whether HTTPS calls are symmetrically or asymmetrically encrypted. Uh, Actually, both types of encryptions are used in there, asymmetric as well as symmetric. Okay, so like symmetric, they have this whole thing. Uh, have you heard of TLS certificates? SSL TLS. That is exactly what that is. So they define the entire protocol of encryption and decryption, the key exchanges and everything. Great answer by Tanmay. And now let us uh, see. In the next episode, we will look at REST APIs, and I hope to see everyone there. And this was a great session, I believe, and I thank you everyone for attending. So, shall we end the session now? Anyone still has any doubts? Thank you so much, Prithviraj. Okay, thank you everyone. Good night. Uh, yes, see you next Saturday.